और जो है अ, अरे ऐसे कैसे यार अभी भी। और चार में दो मैं हूँ और दो आप। यार ओके, यस, ये तो दिखा रहा है कि यस, भाई हम लाइव है, 12 सेकंड से यस, लाइव है। यस, यस। हाँ नाउ वी आर लाइव आई थिंक। ओके। और चार में दो मैं हूँ और दो आप। अरे बड़ा बनाएंगे भाई चैनल को। यार ओके, यस, ये तो दिखा रहा है कि यस, भाई हम लाइव है, 12 सेकंड से यस। लाइव है। ठीक है, ये ना कुछ गड़बड़, हाँ अभी ठीक है। कुछ बोलिएगा भाई। आई थिंक देयर इज सम डिले प्रबोध। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा डिले होता है यार, वो ना कुछ फ्यू सेकंड्स का डिले होता है। हाँ, हाँ, सही है बिल्कुल। रुकिए ना, मैं ज़रा व्हाट्सएप स्टेटस डाल देता हूँ, अगर किसी को आना हो तो तो आ जाएगा। वाइट वाइट से खेल के हारोगे कि ब्लैक से खेल के हारोगे? ये आप खुद से सवाल पूछ रहे हैं या फिर जो है ये सवाल मुझसे है? ये शांति समझौता है। बताइए कितने मिनट का खेलना है यार? तो मुझे तो हराने में 2 ही मिनट लगेगा, बाकी आपको अगर सोचने के लिए टाइम चाहिए तो 10 एक मिनट का खेल लो। चलिए भाई, टोटल 2 वॉचिंग है। आई थिंक उधर से आप हैं, इधर से मैं। सही है, सही है। अरे 3 वॉचिंग हो गया भाई, एक और कोई बंदा आ गया। कोई एक और बंदा आ गया यार। रुकिए ना, मैं अपने एक ग्रुप में डालता हूँ, मैं जहाँ पे मैं थोड़ा सा जाना पहचाना हूँ। सही है, सही है। सो एक बात बताओ, chess.com से खेलने के लिए पहले chess.com पे लॉगिन होना पड़ेगा, राइट? अरे हाँ भाई, आप तो यार, आप सर्किल चेस के फाउंडर है भाई। You want me to play on chess.com, is it? हम लोग सर्किल चेस पे खेल सकते हैं क्या, एक हम दोनों आपस में? हाँ, वी कैन अरे एक्चुअली। आइए ना, सर्किल चेस पे खेलते हैं फिर। ठीक है, लॉगिन हो जाओ। चलिए मैं लॉग इन कर रहा एंड हूँ। एंड गिव मी योर अकाउंट एक्चुअली। ओके सो वी विल गो टू प्ले प्ले अगेंस्ट अ सर्किल चेस यूजर। आपका यूजर नेम क्या है? आई थिंक आप सार्थक टाइप करो, और आप या फिर अपना बताओ। मेरा यार प्रबोध प्रकाश। प्रबोध, यस आई कैन सी। प्रबोध ही है, हाँ बस प्रबोध मैं है। आपको चैलेंज करता हूँ, 5 5 + 3 10 + 5। हाँ हाँ, जितना करना कर दीजिए भाई, अपनी स्वेच्छा टेन की प्लस जहाँ फाइव पे। सही है भाई। हम्म। ओके एक्सेप्ट। आ जाइए गौरव, अभी तो सर्किल चेस की टेस्टिंग भी हो जाएगी और मैच भी हो जाएगा। तो ये क्या है, इंक्रीमेंट है क्या इसमें? आप वाइट हैं हाँ, भाई, आपका 10 + 5। नंबर, आपका नंबर पब्लिक हो गया। ओह या, 2 millions of users। 2 मिलियंस ऑफ यूजर्स। भाई पांच पांच व्यूअर्स है हमारे, टोटल 5 लोग देख रहे भाई। हेलो एवरीवन हु से एवर हैज जॉइंड अस टुडे। Yeah, I think you're going to see a jackpot match. या एंड विथ मी वी हैव गौरव हु हैज फाउंडेड सर्कल चेस। इट्स लाइक अ वेरी इनोवेटिव वे टू लर्न चेस यूजिंग एआई। सो ये सर्कल चेस का ही यूआई है फॉर एवरीबडी हु इज वाचिंग। हम लोग इस गेम का रिव्यू भी कर सकते हैं क्या गौरव बाद में? हाँ, अरे एक वाह। बार अगर then we can actually review। एक व्यूअर हमारे पड़ोसी हैं, दीपू मेनन, बगल में रहते हैं। उन्होंने पिंग करके बोला कि एक मैं भी हूँ। अरे, वंस इन अ लाइफ टाइम गेम होने वाला है, मतलब इस लाइक। मुझे भी लगता है ये गेम ना शायद बहुत प्रोमिनेंट चैनल्स पे आएगा। ओके, इंटरेस्टिंग, यू नो व्हाट, मेरे अकाउंट में आई हैव थिंकिंग टाइम रूल इनेबल्ड। ओके। ओह। हाँ, सो व्हाट इट डज इज कि if you're playing 10 + 5, you cannot make a move in the middle game in less than 5 seconds.
Wow. So you spend that much time thinking about the move. Interesting. One of my friend is saying I'll continue to watch only if you do Namaste that you had done on your old YouTube channel. Namaste, Namaste, bhai log. Yeah, you know lot of opening theory यार प्रबोध. अरे नहीं So भाई. मुश्किल लग रहा है थोड़ा. मुझे लगता है कि ये सर्किल चेस ने ना हैज एलिमिनेटेड द ओनली वीकनेस दैट यू हैड विच इज कि उसने आपको थिंकिंग टाइम दे दिया तो मतलब ऐसा होता है गौरव कि लाइक दिस इज कम्प्लीटली डिसेबल्ड फॉर यू इज इट हाँ, so it is a parental control that we have. हम्म कि चाहे parental control या coach control बोलो. हम्म Because most younger kids tend to play very fast. हम्म 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 So once this rule is enabled, हम्म then you have to take at least that much time, which is equivalent to the increment. हम्म। भाई ये जो चेस चेस पेरेंट का ग्रुप है उसमें डाल दूं या स्कैम वो स्पैम हो जाएगा कर सकते हो मतलब चलिए ऐसा मैं कुछ. डाल देता हूँ कि सर्कल चेस फाउंडर गौरव एंड आई आर प्लेइंग चेस प्लीज ज्वाइन हियर वी आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म Yeah, interesting. I don't like this spin here. Yes. ओके कूल so we have a total of 4 viewers hello everyone Everyone. मुझे ना ये फीचर बहुत अच्छा लगा गौरव की ना यू कैन नॉट प्ले इम्पल्सिव मूव मतलब कंपल्शन में देखना ही हाँ. देखना कि हुआ क्या हाँ, तो आई थिंक स्पेशली यंगर प्लेयर्स का ना वो टेंडेंसी होता है, डिफॉल्ट टेंडेंसी. हम्म। तो गौरव एक बात बताइए जैसे हाँ. कैन वी नॉट डू इट दिस वे लाइक कैन वी नॉट प्ले chess.com using the interface of circle chess with और all the इंटरेस्ट parental controls that you have इंटरेस्टिंग. काफी बढ़िया आइडिया है मतलब ये तो. आई थिंक वो लोग वो इंटरफेस गेम प्ले का इंटरफेस दे डोंट एक्सपोज एक्चुअली chess.com. सो आई हैव दिस स्क्वायर ऑफ का चेस बोर्ड जहाँ पे आई प्ले chess.com के मैचेस आई थिंक कुछ लॉगिन वगैरह देना पड़ता है स्क्वायर ऑफ में आई तो हैव वो लॉग्ड इन आई थिंक एक्सक्लूसिवली दे हैव एक्सपोज्ड द गेम प्ले इंटरफेस ओनली टू सर्टेन कंपनीज, है ना. ओके तो पब्लिक डोमेन में यू कैन यूज देयर एपीआईज टू पुल गेम्स, बट वो गेम प्ले के लिए जो सॉकेट कम्युनिकेशन या मूव बाय मूव कम्युनिकेशन है ना, वो नहीं एक्सपोज करते. ओके इंटरेस्टिंग. अभी अरे आप ये सब जो करते हो ना, ये सही नहीं है. so we have 6 viewers now Gaurav and I think let me tell all those viewers like Gaurav is using a so this is circle chess interface and Gaurav is using a parental control wherein he cannot play a move immediately without thinking so he has I think 5 seconds of timeout uh, after every opponent move Gaurav right Yes, yes, yes. Immediately after the opponent moves, so the chances of blunder decreases हाँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग है गौरव ये तो मुझे ना ऐसा लगता है कि बहुत पहले मुझे शायद एक मूव खेलनी चाहिए थी जो मैंने सोचा था बट मैंने खेला नहीं बट आई एम थिंकिंग राइट नाउ
का पीसेस ना काफी सही पोजीशन है यार, मतलब। नहीं यार, मैं एक मूव सोच रहा था मैं खेलूंगा, बट अभी मैंने खेला नहीं। मैं अभी एक टैक्टिकल, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ अ टैक्टिकल आइडिया हियर, बट आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट लाइक, मैं बोल नहीं सकता एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है। अच्छा चलिए, मैं ना वो लेट मी जस्ट प्ले, It's 11 let o'clock. me just play the idea, I will see what happens. Okay, I think this sounds like a decent idea, but I don't know. ओके। भाई बहुत खांसी हो रखी है। इंटरेस्टिंग। So Gaurav, if you are running low on time, तो ये ओह ओके। पेरेंटल कंट्रोल तब भी एग्जिस्ट करता है या फिर लाइक इट सीज टू एग्जिस्ट? I think less than a few minutes on the clock, it will stop. ओके, so what did you play? Okay, you took it, That's right? right. Huh? Okay. Uh, Oh, yo. ये तो मुझे लगा गौरव कि ये तो शायद अभी तो शायद इजी हो गया अब, बिकॉज आई अच्छा। थिंक आई विल बी एन एक्सचेंज अप, एंड शायद बहुत ज़्यादा पीसेस है नहीं टुवर्ड्स माई किंग साइड, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो शायद थोड़ा इजी हो गया अब। यार वो हो गया। ये तो थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया। कौन कौन दिख रहा है यार? पीपल हु आर वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज से हेलो इन चैट so we can know who you are. It will be interesting to meet you. We can probably go on a stream sometime. Okay. So Gaurav, how would point system work here in this game? So let's say जो आपने नाइट रुक से लिया था, if that is counted as a blunder, so irrespective now, even if you win the game, you will be having negative points for that. Uh, yes, exactly. So we kind of deduct point for every blunder that you make in the game. Okay. And if you make a blunder by moving fast Hmm. without thinking, Hmm. we deduct even more points actually. तो सर्कल चेस गौरव, does it also look कि We don't give points for winning and we don't deduct points for losing. We we reward points for good habits and we debit points for like following not so good habits. तो one one more question here, Gaurav. Would circle chess also know that a person may uh, ideally would need, let's say, X seconds
after which he or she would not commit any blunder. Like ऐसा कुछ analytics भी है क्या? Uh, no, sorry. Come again. What exactly is that? So मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे how do I know कि 5 seconds is good enough for me to not make a blunder? जो आपने टाइम आउट अभी लगा रखा है. नहीं, so idea ये है कि like if you are playing a game with increment, right? हम्म. Increment is basically supposed to like increment time. You are supposed to think in that time, right? So if you are playing 15 plus 10, हम्म. um, ideally we should do that in all the move that we make. You should at least think whether even if it is the most obvious move, हम्म. I think हमें सोचना चाहिए कि ये ब्लंडर तो नहीं है. राइट. Because what looks like the most obvious move at times जहाँ पे कि you are just capturing back for example, है ना, राइट राइट. वो भी हो सकता है कि ब्लंडर हो. हम्म. So it is just to build good habit, nothing else, right? Not that like हम्म. mostly for beginners. राइट. I seem to have a good position now, yeah. Started with हाँ the मुझे bad. भी ऐसा लग रहा है कि यार ना समवेयर आई थिंक वो क्वीन एक्सचेंज नहीं करना चाहिए था शायद. हाँ, आपने मुझे मौका दिया, मैंने छोड़ा नहीं, मुझे लगा कि अभी तो अब शायद आप जीत ही रहे हैं. नहीं जीत तो नहीं रहे हैं. आई थिंक द गेम इज नाउ इक्वल आई गेस. द गेम इज नाउ इक्वल आई बिलीव दैट. मेरे ख्याल से पता है विल विल एनालाइज दिस पोजीशन. मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद आप बिशॉप एक्सचेंज कर सकते थे नाइट के साथ. दैट इज व्हाट आई फेल्ट बट. you mean knight is 5 and then trade. हाँ नाइट टू H5. नहीं, मैं एक्चुअली ये pawn blockade करना चाह रहा था, क्या? and then I wanted to blockade this pawn and then capture this. नहीं बट अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वेयर विल योर नाइट गो एंड इट इज नॉट ओनली ब्लॉकिंग द पॉन इट इज आल्सो ब्लॉकिंग योर I रूक. I wanted to free up my rook actually, है ना? ओके ओके. तो अभी pawn blockade हो गया. So now I can actually get my rooks and free up, get rook and king, and then maybe play on the king side. अभी भी ना मेरा वो thinking time should. मैंने कहीं तो यार आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक. वो शायद क्वीन एक्सचेंज आई शुड नॉट हैव डन दैट. And the problem is that I have these doubled pawns, which is like even more difficult. यार ये ना थोड़ा सा मुझे लगता है दिस इज डिफिकल्ट टू विन नाउ. Interesting. Oh, okay. Thank you.
अरे अभी बराबरी हुई है भाई, अभी तो। uh, अरे नहीं यार, आई अरे थिंक दिस पोजीशन इज जस्ट टू वे टू बैड फॉर मी। मुझे ऐसा ना लग रहा है अंदर से। अब तो ये पॉन को कोई रोक ही नहीं सकता। मुझे भी ऐसे ही सा अजीब सा ना ख्यालात आ रहे हैं थोड़े थोड़े। मेरा ना टाइम विल गो अप टू 2 मिनट्स 1 मिनट एक्चुअली। हम्म। उनकी टाइम, अरे ये कैसे? आई ऑल्सो हैव सम ट्रिक्स अप माई स्लीव्स। इंटरेस्टिंग। नो, ये तो आपने चेकमेट कर लिया खुद को शायद। अरे यार, ये तो चेकमेट हो गया सीरियसली भाई। गुड दिस इज वन। हाँ चेकमेट। मतलब शायद ब्लंडर किया, पर आई थिंक नीचे आके भी ना नाइट ज्यादा था ऊपर। आई 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 थिंक डिडंट सी रुक जी3। चलिए इसको रिव्यू करते हैं। क्यूरियस टेक, हेलो क्यूरियस टेक, हाउ आर यू? क्यूरियस टेक, इसको रिव्यू करना है, अगला खेलना है। हाँ इंटरेस्टिंग ना रिव्यू। रिव्यू हम लोग भी शायद अगर कोई शेयर्ड तरीका होता तो काफी अच्छा होता। क्या फिर से If बोलिए। we could- अगर कोई शेयर्ड व्यू का तरीका होता रिव्यू का तो काफी अच्छा होता, वेयर आई एम आल्सो लाइक सीइंग द सेम रिव्यू स्क्रीन दैट यू आर सीइंग। ओह दैट वुड हैव बीन सो इंटरेस्टिंग। गुड गुड यूज केस नाउ, मतलब दोनों लोग राइट, साथ में सेम स्क्रीन पर रिव्यू कर रहे हैं। इट्स लाइक अ क्लासरूम। हम्म। Curious Tech is asking Gaurav, what is the tech stack of Circle Chess? Oh, interesting. So tech stack, we have React JS on the front end, and backend has Python, Node.js, basically different servers written in different language. So core gameplay engine is in Node.js with supports asynchronous IO, and most of the REST APIs are in Python Django. Deepu Bhai is coding also while watching our games. Yeah, I think I should have now. Maybe we should play one game where I have disabled parental control. यार अच्छा गौरव, अभी मैं इसको जैसे हाउ कैन आई पॉज दिस पोजीशन? Uh, which position are you reviewing the game? हाँ लाइक इफ यू, ओ अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा। ओके So ओके but ना even if आप अगर वो पेज से पीछे जाते हो, you can go back and then do other things. The game review will still continue. ओके। सो सो मैंने जो मूव खेला था ना, नाइट एक्स G4, तो that apparently looks like a blunder and you were winning there, but queen x G4 was apparently not okay. तो चलिए, if you cannot see the review then let us play another game. हाँ ठीक है। so आपका वैसे जीरो ब्लंडर दिखा रहा है, आई थिंक इट विल हैपन, लास्ट मूव इज ए ब्लंडर। जहाँ आप चेकमेट हुए हैं। हाँ वो मैंने मतलब संभावना I just did not see that rook g3 यार। हम्म, ठीक है, लेट अस प्ले नहीं अनदर ये ना गेम। शायद ड्रॉइश गेम था। I see that you could go to rook h4 and then a repeat था, because if I come down you will take my knight actually, you know. नहीं, मुझे लगा गौरव ना दैट यू हैड दिस E2
जहाँ पे आई Hmm. कैन अटैक द नाइट बट आई कैनॉट रियली टेक द नाइट। तो आई वॉज थिंकिंग दैट यू वुड गो टू ई टू। अगर आप जैसे ऐसा कुछ जाते ना एफ टू के आसपास कुछ जाते तो मे बी मैं वो पिन कर देता, एब्सोल्यूट पिन, आई वुड हैव टेकन द रुक, देन आई वुड हैव वन द गेम। Uh, बट ई टू मुझे लगा, ई टू देन फॉलोड बाई डी वन एंड देन वहाँ पे आप चुपचाप, मतलब यू कुड हैव जस्ट, आप चुपचाप बैठ सकते थे शायद, मुझे ऐसा लगा। hmm. नहीं, मुझे एक्चुअली ना मतलब किंग को आई जस्ट वांटेड टू कीप इट लाइक टुवर्ड्स टॉप हाफ एक्चुअली, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। अरे ठीक है, एनीवे लेट्स मे बी डू वन मोर चैलेंज। ठीक है। दिस टाइम वी प्ले अ 5+3। ओके, यू आर बीइंग आस्क्ड गौरव व्हाट इंजन। हाँ, 5+3 ठीक है यार, आप मुझे भेज दिएगा वो चैलेंज। यू What engine has in the for एनालिसिस ऑफ द गेम। engine? So we use Stockfish, but we also use Leela Chess LC0 engine to like, especially we have built quite a few human-like bots, right? So probably uh, we can actually resume this game once again in some time, Prabodh. But talking about engine, we have built some bots, human-like bots, right? So you can play against Kaisa bot, which wherein you can play against specific rating strength, right? So if you choose, let's say, Casa 1800, this is supposed to play like how a 1800 normal player will play, which is not like Stockfish, but more like a human network model, neural net model, right? So we use both Leela and Stockfish. You know. So Gaurav, this 1800 level, is this like a FIDE level that you're talking about, or you're talking about like जो online rating होती है on chess.com and all? नहीं, तो वो एक्चुअली फिडे रेटिंग इक्विवेलेंट है। Oh You know, wow. so we have tried to create bots and map those bots to a rating level which is FIDE equivalent, ELO equivalent, based on, let's say, several aspects. One, we know the FIDE ID of the player, hence we know your rating. Second, we also find out the average centipon loss from all your games that we have played, and there is a correlation between average centipon loss and your FIDE rating. So people who are like 2700 plus, like super GMs and all, their average centipon loss will be in the range of 8 to 12, 14, and so on. Especially early beginners, they will have like even in the range of 60, 70, 80 or so. So you can actually fetch out the average centipon loss and then kind of guess the rating of the player. Hmm. मैंने आपको चैलेंज किया, अभी आपको फिर से क्या होगा चैलेंज? How are you white all the time? Like, are you choosing it, or is it's coincidence? नहीं, it's actually randomized, है ना? मतलब कुछ probability distribution से करते हैं. So it if you play 3 4 games, 5 games, you should get 50% of the time you should get by, 50% of the time you should get by. Yeah, we are looks like we will enter into the same opening, and I did not like my knight queen in the last game. अरे लास्ट गेम तो अच्छा हुआ था यार, आई थिंक। तो नहीं, आपने वहाँ पे नाइट टेक स्पॉन का ना, that was, I felt that move was not good, नाइट टेक स्पॉन. वो But मूव अच्छी नहीं थी, मतलब आई मैंने ऑल्सो डिड उस नॉट लाइक दैट मूव, बट मैं सोचा चलो यार लेट्स ट्राई। हाँ, मैंने एक्सप्लॉइट नहीं किया उसको शायद सही तरीके से. एक्चुअली मैं वो देखूंगा आफ्टर दिस स्ट्रीम, आई विल जस्ट सी लाइक व्हाई दैट मूव वाज रॉन्ग। बट नॉट बैड यार, आपका chess.com का लेवल, मेरा chess.com का लेवल काफी डिफरेंट है, बट गुड दैट आई कुड एक्चुअली सस्टेन टिल द एंड गेम. मतलब काफी बढ़िया अकम्पलिशमेंट है मेरे लिए तो. यार मेरा थोड़ा सा भी गिर गया है, लाइक आई इन ब्लिट्स आल्सो आई टच्ड 1760 और समथिंग ऑन chess.com, बट अभी वो एकदम खराब हो गया। Oh, this is my move to play. Oh, I did not realize that. Sorry. हाँ, और तभी मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, कोई बात नहीं. अरे यार.
I don't like. I didn't like last time, so let me play this. तो ये 1678 इज माई सर्कल चेस का अभी गेम का रेटिंग है क्या? Hmm. ओ वाओ. So this should be like as close to your FIDE strength as possible, right? So if you play more on circle chess, it should stabilize because even the rating change जो हम लोग करते हैं, हम्म. actually we look at the FIDE uh, table हम्म. वहाँ से करते हैं actually. So how many points you lose when you win against a similar rated player versus you gain when you win? हम्म. That rating change is picked up from the FIDE rulebook. बट यार गौरव, इस मूव के बारे में आपका क्या कहना है जो आपने अभी क्वीन से कैप्चर किया? नहीं ऐसा कोई फाइट है नहीं मतलब सॉरी 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 कोई फाइट नहीं था मतलब चलता है चलता है. अच्छा ओके ऐसे ओके एक्चुअली मैंने गलत खेला. बेटर मूव वुड हैव बीन knight to d7. Sorry, basically knight f to d7 and then pawn push to f6. Because you cannot move that knight. So now I'll have to again figure out where my knight on f6 goes. यार अच्छा खेलते हो यार आप। Hmm? Curious Tech is asking, Gaurav, हाँ can we play tournaments on Circle Chess? we are not yet ready with the tournament feature but actually on circle chess you can play against a bot human bot play against any opponent who is on circle chess. You can play from any specific position which we have defined in our library. Like if you want to play opening, let's say King's Indian opening, or if you want to play Rook end game, you can choose those options and then you can start learning those specific uh, uh, opening, middle game, or end game. मुझे लगता है Uh, ये मूव ना शायद आपने गौरव थोड़ी सी गड़बड़ खेली, बिकॉज नाउ योर नाइट विल बी पुश टू द कॉर्नर. uh, ठीक है गुड पॉइंट अभी ओके, अभी तो मुझे लगता है काफ़ी सिंपल हो गया अभी हम, होपफुली, बिकॉज यू डोंट हैव अ नाइट टू लाइक रिकैप्चर ऑन e4. सही है बढ़िया आपने आउटपोस्ट पकड़ लिया ओके We have 8 viewers, Gaurav, so which is like the highest. So for people who have joined recently, Gaurav is the founder of Circle Chess, and we are using his platform to play the games.
It's an amazing platform. I am also like a paid subscriber to the platform, and I heavily use this platform for doing reviews of my game. Thanks for both. And in fact, you have come up with a lot of constructive and useful feedback, which we have implemented in due course. Yeah, this move I don't like. So let us maybe yes. Okay. Hmm. Time to develop my bishop. But Okay. यार 30 सेकेंड्स इसमें इंक्रीमेंट है क्या? 3 सेकेंड्स का इंक्रीमेंट है राइट? हाँ यार, मेरे पास तो बहुत कम टाइम है. ये देखिए यार अभी ना लेट्स ब्लॉक योर बिशॉप परमानेंटली. Let it feel good within its own home. अरे भाई 16 सेकेंड से हमने क्या मतलब 5+3 किया ना. Hmm. आई शुड मे मूव फास्ट नाउ. यार इससे मत करो. 7 seconds. Hmm. टाइम प्रेशर. अरे टाइम प्रेशर. फ्री नाइट है भाई, फ्री क्वीन. रिजाइन रिजाइन रिजाइन. नहीं, टाइम प्रेशर एक्चुअली. अभी तो कुछ नहीं बचा. हम्म. चलो, गुड गेम यार, यू वन बोथ द गेम्स. वेरी गुड. बट ये तो एक्सपेक्टेड ही था ना. हाँ मतलब मैं तो 1% की प्रोबेबिलिटी पे खेल रहा था. बट उस हिसाब से आई थिंक अच्छा ही हुआ. मैं एक उससे खेलता हूँ यार. लेट शुड आई प्ले ओके मे बी, या फिर क्या करना है? शुड वी स्टॉप हियर? हम्म. हाँ मतलब वी कैन वी कैन डू प्ले एंड लर्न मे बी, बट एनीवे. प्ले एंड लर्न क्या होता है? सो मैं गया प्ले पे. आई वन सेकंड, आई क्लिक ऑन प्ले. प्ले यू डोंट. अगेंस्ट कैसा बॉट? प्ले एंड लर्न ओके. Oh, it shows coming soon to me. Okay. So it is only enabled for like only specific set of users, Hmm. where you can play, and every move that you make, it tells you why this move is right or wrong. Actually, we'll make it accessible to like wider audience very soon. ओ तो ये रियल टाइम बताएगा कि why this move was right or wrong, is it? हाँ मतलब basically you are playing in the assisted mode actually. तो Oh. कई बार मतलब the best time to learn is when you made a mistake, right? So because then at that time you are not playing for winning, you are more like playing in a learning mode. So अगर आपने जो move चला वहीं पे मैं बताता हूँ, then the tendency to remember will be more versus like, क्योंकि
कई बार गेम खत्म होने के बाद पीपल डोंट गो बैक एंड रिव्यू, है ना? Hmm. सो उसके लिए वी काइंड ऑफ बिल्ट अ मोड विच इज प्ले एंड लर्न मोड, where if you're playing in that mode, you will learn from all your mistakes right then and there itself in real time. Hmm. काफी इंटरेस्टिंग. So, yeah. Play against कैसा bot, play against random opponent, play circle chess user. ये इनमें डिफरेंस क्या है? रैंडम, अच्छा रैंडम ओपोनेंट आई बिलीव इज लाइक Uh, सिमुलेटेड ओपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक रेटिंग. uh, you can go to pick pick position from library, हम्म. and then you either choose one of those like stages of the game which you want to work on, हम्म. opening, middle game, or end game. If you हम्म. choose one of those, you can choose the specific position type that you want to play. For ओके. example, in middle game you want to play with isolated pawns, हम्म. open files, हम्म. files. हम्म. It gives you option to play for and against a specific position, right? So that if you practice more and more on that position, you will end up learning how to play. Let's say, for example, people say that double bishops are good versus bishop and knight, right? हम्म. ये पता नहीं है कि वो good है तो करना क्या है, मतलब. राइट. So, how do you play with and against double bishop? So I think a lot of those things you only exercise when you stumble upon that game, that type of a game in your tournament. राइट. So better to start with those positions where you are playing with double bishop, playing with isolated pawn, and then maybe practice quite a few positions so that you apply what you have learned. हम्म. So वो है भाई. भाई मैं कैसा कैसा बॉट के साथ खेल रहा हूँ विच इज़ 1000 रेटेड, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वही ज़्यादा हो जाएगा. So 1000 federated होगा वो actually. 1000 को you should be able to beat. 14 up to 1400 board you should be able to beat comfortably. 1500, 1600 also. हम्म. नहीं, आई थिंक द बॉट इज अ पॉन अप नाउ apparently. है? काफ़ी मारा मारी हो रही है गेम में. वैसे मोस्टली जो बिगिनर्स लेवल के प्लेयर होते हैं, अर्ली रेटिंग वाले काफी सारे ट्रेड करते हैं. हम्म. So if you play with lower rated bots, no, it will कीप result ट्रेडिंग. in lot of trades. तो हाउ व्हाई इज दिस बॉट टेकिंग सो मच ऑफ टाइम टू लाइक थिंक? कितना विंडो का कितना कितना उसका खेल रहा हो टाइम कंट्रोल का? 5+3. 5+3. Does it have more time than you or is it like same It time? has a lot less time than me. Like it has 3 minutes 50 seconds or so, while I have 5 minutes. So see, I think the logic also is like whenever there is a trade situation or situations where we should take time, it takes time. It tries to take time. Whenever as a human, we go under time pressure, we tend to play fast. So Hmm. that kind of human behavior is baked into the like time it takes to play a move, Hmm. so that it looks more human. I would be pretty sure that towards the end game it will start playing fast and it won't go under tremendous time pressure. So abhi the situation is that now I have like 4 pieces. Okay, Hmm. where is the engine hosted? Is there a lot of latency? So I think he Curious Tech is asking this question, but I think this is not latency. This is the behavior of the engine, I believe, right? Yeah. This is not latency. This is the behavior of the bot. Like we want to make it play as close to human as possible. For example, when I was playing against you, Prabodh, I had maybe 1 minute. You had 4 minutes, right? So it is designed to play more like give you as close Hmm. experience as possible, like how you play against a human opponent in terms of the kind of moves that it picks up, time that it takes,
So you should get exactly the feeling of how you feel like playing against 1,000 player also. Hmm. काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि sometimes when computer plays just way too fast, right? That is also like a very poor experience. Most bots across different platforms have stockfish actually. Hmm. Hmm. So idea was not to make you play against stockfish because you know that you know the best case it will have lesser depth but it will still win, right? Right. uh, the idea for human bot was more like, can I get the similar experience of playing against a rated player? Right. So कई बार obvious blunder भी करता है, so because it has learned from human moves actually. We have fed millions of games to create these bots actually, trained. And they are all like FIDE games that you have. No, those games are chess.com leeches and games pulled up from like different platforms actually. Okay. Games which are available as open source for us to train the model, right? But then we have adjusted the ratings Hmm. Hmm. based on like average S&P upon loss versus your rating and so on, and not picked up the rating from there. Hmm. So Gaurav, Curious Tech is asking, then does it mean if we set the ELO to 1800 plus, it will play fast? Yes, yes. So time management of 1800 and 2000 ELO will be uh, much better than time management of 1,000. Abhi now he has started playing you, like a if thousand you go series. to if you go to assessment also, right? Prabodh, maybe I think you are in the middle of the game. I don't know if you're winning. I can't actually see the stream, but if you're winning, that's expected uh, Behavior. be able to beat 1,000 bot. If not, probably you might have done some mistakes possibly. Hmm. But if you are done with that game, probably you can maybe just uh, show how we do assessment and what type of uh, uh, trained bot you need to play against in order to improve certain areas of the game, right? So we are trying to build a very personalized platform Hmm. where it is not the same standard interface experience for everybody who goes out there to play, Right. but then very customized, personalized, in the sense you can focus on what you are strong at, you can try to improve on the areas where you are weak at. uh, we are also in fact trying to build a content set which will be very personalized to your strength and weaknesses. So we want to create a whole training plan for everybody out there, right? So if you are at a beginner level, you should consume so and so content. If you're at a advanced level, let's say you might be advanced in calculation, you might be not so good in end game. So we are trying to find out the strength of every single player Hmm. and trying to create a very personalized improvement journey for that. And this is all automated, right? Like, हाँ हाँ ये इसमें कुछ Kaisa नहीं will manual है. understand it. Yeah, it is. I mean, nothing is manual. The whole interface that you see, Hmm. everything is basically trying to understand as much about you from your own games. Because see, when you try to take a demo test or like play with somebody and try to understand how much his strength is in 30 minutes, it's just not possible. Hmm. Hmm. But then if I Hmm. look at hundreds of your game Right. and I see what type of moves you make in each situation, Hmm. which Hmm. all helps you understand, right? For example, we all know that we should centralize the king Right. in the end, but very few actually make the right judgment, right? Yeah. Yeah. So we all know that we should exploit the open file, but very few try to basically do it right way, right? So we have tried to find out like a lot of aspects of chess and Hmm. then try to assess you on all those aspects and tell you that these are the areas that you can improve. That's how assessment comes into play, so that you know what you are not so good at and focus on that area rather than like just keep doing the same thing. For example, people who are good at opening, they will keep spending time in opening. Right. Right?
not the best strategy, because that's not the best use of best ROI of your time spent, right? So you want to maximize the return on your time spent. Hmm. Hmm. You better focus on areas where if you your little time spent gives you highest Right. impact. That's the concept. काफ़ी इंटरेस्टिंग है गौरव. इनफैक्ट ये बंदा जो है, दिस बॉट इज़ नॉट गिविंग अप, विच इज़ सो इंटरेस्टिंग, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, आई ओके, आई डिड अ मिस्टेक, बट मुझे लगता है कि या इट इज़ रुक वर्सेस क्वीन, जो कि मुझे तो आई थिंक आई शुड बी एबल टू इजीली विन द गेम नाउ. Shouldn't Hmm. take a lot. But then you might have observed, right, that it plays like human looking moves, right? हाँ हाँ, एक्चुअली यू नो, कुछ कुछ मूव से आई वाज सरप्राइज्ड, बट कुछ मतलब एक्चुअली ना, लाइक द ट्रूथ इज दैट इट हैज इवेंचुअली एंडेड अप इन अ पोजीशन दैट इज क्लियरली लूजिंग फॉर द ओपोनेंट. Because see, I mean, if you play against 1,000, you should most likely win. So nothing surprising there, right? Because if you play against 17, 1800, you will find it tough to Right. beat. Because I mean, think of it like you're playing against that much rated player. Hmm. So curious tech is asking, time management is understandable and makes sense. Oh, बात करते करते गड़बड़ हो गई. Makes sense, but what about accuracy? Speed and accuracy both will be high with higher ELO. Interesting point. So accuracy is driven by the moves that it has learned from all the games that we have played. Accuracy and time management, they're both independent in our system. Okay. Because accuracy is purely based on what it has learned from all the games that we have played. Time management is more like customization that we have done trying to match the behavior of a human. So it doesn't really have to do with whether it will uh, uh, come up with the worst move if I play fast or best move if I take more time. These two things are not related. मुझे काफी लगता है अब टफ. आपका जीतना हाँ, हाँ. अब आपका जीतना बहुत जरूरी हो लगता है. यार ये हार मान नहीं रहा. ओ नहीं यार, अभी अब तो इसने क्लियरली ब्लंडर कर दिया है. मतलब व्हाट इज देयर लेफ्ट नाउ. अभी तो अभी तो एक, देयर इज अ सोल किंग विद द पॉन. हाँ, तो ऐसा लगा कि ह्यूमन वाली फीलिंग आई थोड़ी सी कि मतलब कि एक्चुअली यार इट आप, यू आर वाज. राइट, यू आर, पता है, आई थिंक थोड़ा सा देखना पड़ेगा विद अ हायर स्ट्रेंथ प्लेयर टू रियली सी कि इज इट प्लेइंग, मतलब वो एक्चुअली डिफरेंस आता है कि नहीं आता है. बट आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, क्योंकि इसने लास्ट में ना, इनिशियली इट वाज प्लेइंग गुड, बट लास्ट में तो इसने थोड़ा बहुत जो है बकर कर दिया. भाई मैंने भी तो किया कि किंग G4. मेरा भी तो मैंने वन मूव ब्लंडर किया, गेम ओवर हो गया. यार आप Yeah, लोग I तो think देखिए मतलब. so. You'll find lot of similarity, compared to how you play against a human rated strength of a similar rating. ओके, दिस गाय हैज बीन चेकमेटेड. बधाई हो. चलो, सही है, कूल है, बढ़िया है यार. चलिए यार गौरव, गुड टॉकिंग टू नाइस. यू. बढ़िया. Let's आफ्टर keep, लॉन्ग टाइम. let's keep. So Gaurav, like, okay, fine. I'll ping you offline. Okay. Okay. Cool. Thank you, Gaurav. We'll also end the stream for people who joined us. Thank you so much. We reached 9 viewers, which is like highest in the history of my YouTube channel. चलिए यार, bye bye Gaurav. Nice to roll. Bye. Good night. Thank Bye. you. Okay, I am going to now end.